Good morning, children. So we are going to start a new chapter. As you can see, it is Indian Constitution. है ना? अभी आप लोगों के पास भी बुक्स होती है, तो आपको पता चलता है कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है. वैसे ही अगर किसी कंट्री को चलाना हो तो उसके लिए भी बुक होती है. तो जिस बुक से हमारी कंट्री चलती है उस बुक को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो इंडिया को चलाने के लिए, रन करने के लिए बुक है, इसीलिए उसे कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. लेट्स सी दैट व्हाट वी आर गोइंग टू नो अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, so what is basically a constitution? Almost everything we do is governed by some set of rules. There are rules for the game. जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं तो उसके रूल्स होते हैं, हम कहीं वर्शिप जाते हैं, कहीं हम काम करते हैं, उसके रूल्स होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ फुटबॉल अ रेफरी हैज अ फुल अथॉरिटी टू इन्फोर्स द रूल्स और द लॉ ऑफ अ गेम. जैसे कि अगर हम फुटबॉल के गेम की एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें जो रेफरी होता है उसको अथॉरिटी होती है, उसको पावर होती है कि जितने भी रूल हैं गेम के उसको इन्फोर्स करे, उसको इम्प्लीमेंट करे ऑन द प्लेयर्स. व्हेन अ प्लेयर डू समथिंग, अगर प्लेयर कोई चीज गलत करता है, अगेंस्ट रूल करता है, तो वो क्या करता है, उसके खिलाफ एक्शन लेता है. इज इट? इन द सेम वे जो हमारे लेजिस्लेचर्स होते हैं, लेजिस्लेचर्स मीन्स पार्लियामेंट, यस, लोकसभा, राज्यसभा, आपने नाम सुना है ना, उनका काम क्या होता है, हमारी कंट्री में लॉ बनाने का. इज इट? वी नीड अ लॉ इन अवर सोसाइटी, सो अवर सोसाइटी कैन रेगुलेट एंड वर्क प्रॉपरली, ताकि हमारी सोसाइटी है वो अच्छे से काम करे, रूल बेस्ड काम करे, ताकि किसी के साथ अन्याय, इनजस्टिस ना हो. They are designed to protect us and our property and to ensure that everyone in society behaves the way the community expect them to. ताकि हम सब एक रूल एंड रेगुलेशन पे चले, तभी सोसाइटी मेंटेन होती है ना बच्चों. अगर हम क्लास में भी टीचर किसी को ज्यादा प्रेफरेंस दे, किसी को कम प्रेफरेंस दे, तो आप बोलते हो ना कि मैडम दिस इज नॉट फेयर. तो सोसाइटी भी ऐसे ही चलती है, सम सेट ऑफ रूल से. Law takes us what to expect as a consequence of our action. Laws have been the glue that keep the society together. Without law, there would be complete anarchy. अगर law ही एक ऐसा चीज है जिससे सोसाइटी बंध के रहती है, साथ चलती है, और अगर रूल्स नहीं होंगे, लॉज नहीं होंगे लोगों के लिए, तो क्या हो जाएगा, एनार्की की तरह, मीन्स राजाशाही की तरह हो जाएगा. मीन्स एक आदमी ने जो बोल दिया वही चलेगा, वो ना किसी की सुनेंगे ना किसी की मानेंगे. ओके, सो दिस इज हाउ थ्रू द लॉ सोसाइटी वर्क. और वो बुक जिसमें ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. A systematic compilation of a set of rules to run the country is known as the constitution of the country. Constitution can be written or unwritten form. Constitution वो बुक है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होती है कंट्री को चलाने के लिए. कभी कभी ये रिटन भी होता है और कभी कभी अनरिटन भी होता है. दैट वी विल सी फर्दर. So you have already seen that what is called the constitution. Now we'll see how the constitution has been framed, means उसको बनाया कैसे गया. अब जब हम फ्रेमिंग के बारे में पढ़ते हैं तो कोई भी जब लॉ बनता है तो वो ड्राफ्ट होता है, मीन्स पहले उसको लिखा जाता है, सारे एक्सपर्ट लोग उसको मिलकर लिखते हैं एंड देन इट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट. तो इस तरह से ही बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे 1947 में, उन लोगों की एक कमेटी बनी और उस कमेटी के लोगों ने मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा. अब जिन लोगों ने इसको मिल के लिखा, क्योंकि उस पूरे ग्रुप को एक नेम दिया गया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली.
The Constituent Assembly of India was elected to write the Constitution of India. और ये सारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने मिल के इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बुक को लिखा. तो उन सारे ग्रुप को एक नेम दिया गया. दे आर कॉल्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके. Following India's independence from the Great Britain, its members served as the nation's first parliament. क्योंकि ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट के बाद ये पहली कमेटी बनी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कर रही थी. सो दे आर कॉल्ड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट. क्योंकि पार्लियामेंट का काम क्या होता है? लॉ बनाने का. और इन लोगों ने सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. सो दीज आर द पीपल who are the first parliament. पहला लॉ, पहला रूल्स रेगुलेशन का बुक दिया. सो दे आर कॉल्ड द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया. नाउ what was the objective of the constituent assembly? constituent assembly जो बनी थी उसके गोल्स क्या थे, उसको क्या क्या अचीव करना था? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था, उसके लिए अप्रूवल लेना था, और promulgate the constitution means उसको अच्छे से चेक करना, सर्वे करना, और जितने भी मेंबर्स थे सबको उसके ऊपर एग्री होना, and then to pass on to the people. So these are the objective of the constituent assembly. So you have seen what was the objective of the Constituent Assembly. Now, the framing of the Constitution has been started. So, Dr. Rajendra Prasad became the President of the Constituent Assembly, and Dr. Bhim Rao Ambedkar became the Chairman of its drafting committee on December 11, 1946. Now, what actually it means? See, in democracy, the head of the state is called the president. Okay, so whoever will be the head of the state will also be the president of the country will also be the president of the Constituent Assembly, and that's why Dr. Rajendra Prasad became the first president of India, and Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Bhim Rao Ambedkar was the chairman of the drafting committee. Okay, so these both are two different things. As Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly, so he became the first president of India. Okay, but what was the work of the Dr. Bhim Rao Ambedkar? He was the chairman of the drafting committee. After all the members who were the member of the committee, when they give suggestions, when they draft anything, then it is the work of Dr. Bhim Rao Ambedkar to give it the final signal. Okay, so this is how the framing of the Constitution of India started. How was the Constitution of the India formed? See, the Constitution of India has some national goals, aims when it was framed: democracy, socialism, secularism, national unity, etc. And the Constituent Assembly started working from the 9th December 1946, and it has lots of scholars, leaders as its member. The political vision and the foresight was incorporated in the Constitution. जो एम, ऑब्जेक्टिव, जो विजन था, वो सब कुछ इस बुक में डाला गया. Okay, now who all are there are many scholars and the leaders who become the part of this committee, and these members are like Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abdul Kalam Azad, Prasad Mukherjee, Sardar Baldev Singh. Other than these scholars, there were the representative of the different committee, like the Frank Anthony was an Anglo-Indian from an Anglo-Indian committee. H.P. Modi represented the Parsi committee. Then the committee had a various constitutional scholars also, like Alladin Krishnaswamy Iyer and Dr. Bhim Rao Ambedkar, K.M. Munshi, etc. Not only there were the male members, but there were also the female members like Sarojini Naidu and Vijaya Lakshmi Pandit. Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. There were the number of the subcommittee to take the various aspects of the constitution.
द ड्राफ्टिंग कमेटी, वहाँ पे कुछ सब कमिटीज भी थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उसका भी वो देख रेख करते थे. द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, gave to the constitution final seat. As he was the chairman of the committee, so it was his work to give the final shape of the constitution. Total 166 meetings were held. Total कितनी meetings हुई? 166 meetings were held in 2 years 11 months and 18 days. पूरा कितना साल लगा इसको बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में? 2 years 11 months and 18 days. On 26 November 1949, the committee presented this constitution. It was signed on the 26th November 1949 and which was enforced on 26 January 1950, and that's why we celebrate Republic Day on 26 January 1950. So this is how the whole constitution was formed, or the whole constitution was framed, and it took the 2 years 11 months and 18 days, that is almost 3 years. Now why do we need the constitution? So we need the constitution because it defines the ethos and ideals of the country. It tells about the kind of a government of the country. So in short, the constitution is a book which tells about how there should be the government, what is the outline of the government, on what principles, and on what ethics government should run or govern the country. And for that purpose only it is required. It defines the nature of the political system of the country. It lays down the limitation on the power of the government. Government के powers extreme नहीं है. Okay, it has some limitations also, and make citizens aware of their right. Citizens क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं तो उनके कुछ राइट्स भी हैं. इट जनरेट द ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. ओके, because there are certain set of the written rules are there, so it also generates the trust among the people that the government is not blindly going to do anything. Okay, they don't just have an extreme power to take the decision whatever they require. They have to work as per the wish of the people. Indian Constitution was made, so it has been finally the drafting work has been done and it has been passed in the parliament in the 26th November 1949, but constitution was enforced on 26th January 1950. Already I have told you, and that's why we celebrate 26th January every year as a Republic Day. Means on that day actually the power has came to the people, that's why it is called the Republic. Okay, so the power has been given in the hands of the people. In democracy, is the people elect the government, that's why it is called the Republic. Okay, so when we celebrate the Republic Day, that is on the 26th January every year, and it has started on 1950. I hope this module is clear to you. More about the constitution we will read in the next module.